So whenever mechanical energy changes to other forms of energy, it is always in the form of kinetic energy and not in the form of potential energy. That is, the stored potential energy first changes to kinetic energy and then kinetic energy changes to other form. While transformation of energy from one form to other desired form, the entire energy does not change into the desired form, but a part of it changes either to some other undesirable form, usually heat due to friction, or a part is lost to surrounding due to radiation which is not useful. This conversion of energy to the undesirable or non-useful form is called dissipation of energy. Kindly underline this word, dissipation of energy. Since this part of energy is not available to us for any productive purpose, so we call this energy as degraded form of energy. So dissipation of energy and degraded form of energy. What is? हाँ, पहले अंडरलाइन कर लो, बता रहा हूँ. लिखो, वहां पे लिखा हुआ है. Do you know में कर लिया? हाँ, दोनों. Dissipation of energy means if I am trying to convert one form of energy, one form of energy to other form. Suppose initially I had 100 joules of energy. The conversion may not be such that the other form of energy remains exactly equal to 100 joules. So if I have energy in one form equal to 100 joules, the other form of energy which I am trying to convert this energy into may be less than 100 joules. I can say 80 joules. In that scenario, the difference of the two, that is 20 joules, which is difference of 100 joule and 80 joule. This 20 joule is either lost to surrounding in form of heat, energy through radiations. Now this part is known as dissipated energy or energy dissipation. This is dissipation of energy or dissipated energy. Okay. Apart from that, this is also known as degraded energy. Degraded
एनर्जी, ठीक है? Why? Because it is not being used to do any useful stuff. Yes. Today is 3rd. अंडरस्टूड एवरीवन? जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होने के टाइम पर लॉस होता है टू द सराउंडिंग या लॉस्ट होता है टू द सराउंडिंग विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म, सो कुछ पार्ट यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया, दैट गॉट लॉस्ट टू सराउंडिंग, and that lost energy is called dissipated energy or dissipation of energy or degraded energy. Is that okay? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि whenever mechanical energy changes to, ठीक है, mechanical energy to work conversion, इस प्रोसेस में whether mechanical is in form of kinetic energy और पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ इन फॉर्म ऑफ के, then it directly gets converted to work. Is that okay? But if it is in form of, if it is in form of PE, it will first get converted to kinetic energy, and from kinetic energy it will get converted to work. Is that okay? So potential to direct work, that's not possible. It will always have to go via kinetic energy. Is that okay? Yes. Direct potential to work conversion, that's never going to happen. It has to go via kinetic energy transformation. Is that okay? Okay. Next thing is power. Power by definition is the rate of doing work or the rate at which energy is being delivered. What does this mean? Suppose I'm supplying 15 joules of energy in 5 seconds. My power is going to be 15 upon 5, that is 3 joules per second. Is that okay?
Joule per second is also referred as watt. So the formula for power is going to be work done or energy used upon time taken. SI unit of power is watt. 1 W is equal to 1 joule per second. Another unit of power could be horsepower. Horsepower HP 1 HP is equal to 746 watt. ठीक है? Apart from that, we have kilowatt. So you put kilo in front of any unit, it is going to be equal to 1000 times that unit, and you put joule per second, that is of that unit, and you put mega in front of any unit, it is going to be 6 watt or 1000 kilo watt. Is that okay? Is this clear? Now let us do two small questions. Find the power delivered if a block of mass 5 kg at rest starts moving with 10 meters per second. Upon application, follow it up,
of force किसके टेस्ट में बेटा on application of a force for 5 seconds. Are we getting this question? हाँ क्या बोल रहे थे? पता नहीं. क्या नहीं पढ़ना है? सर बोलो बेटा. हाँ 10 वॉट आ गया आपका. बताइए कैसे आया? सर वर्क डन इक्वल्स 50 जूल. कैसे? तो 5 kg into 10 वॉट. हाँ क्वेश्चन पढ़ो समझो फिर सॉल्व करो. ऐसे ही नंबर को फटाफट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर नहीं बता देना है. सब गलत होगा. हेलो हेलो सो work done is equal to change in kinetic energy which is equal to half m v final square minus half m v initial square which is equal to, as this number is 0 क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है, so it will just be equal to this thing, that is half into 5 into 10 का square minus half into 5 into 0 का square. ठीक है? This becomes 250 joules. Therefore, power is equal to work done upon time taken. That is equal to 250 joule by 5 second, which is equal to 50. Is that okay? कहाँ पे जीरो आ गया बेटा? जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड जीरो है का मतलब क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ. What does speed zero means? Speed equal to zero means what? We are not in motion. That is, we are at rest. So if anything is at rest, that means it has a speed equal to zero. Is it okay? Very good. यहाँ पर दिया हुआ है at rest. ठीक है? So initially it is at rest. There should not be any doubt in it. M बेटा मास होता है. ठीक है? Let us do another question. बोलिए बेटा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम?
सर मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आया, लास्ट क्लास मैंने सेंड नहीं करी, तो एक बार समझा सकते हैं? कौन सा? जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, ये होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। So this is final kinetic energy and this is the other one is initial kinetic energy. Initial kinetic energy is 0. Initial kinetic energy is 0 because speed is 0. initially it's at 0. rest. So this is Ke final and this is Ke Initial. initial. Okay. Is that okay? Very good. बोलिए, कुछ डाउट? या अभी तक नोट ही नहीं कर पाए हम लोग? अभी तक हम लोग अम्यूज्ड हैं कि ये सॉल्व कैसे हो गया, बताइए। सर 250 है। अरे 1/2 मास 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वेरी गुड, नोट करना। और कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? नाइस, लेट अस अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन। 55 5 seconds 5 seconds ना 5 बेटा वो सेकेंड है, एस ई सी। अभी क्लियर है? गुड। मोटर rated 100 watt works for 2 minutes to raise water into a water tank which is 20 meters 20 meter above the ground. What mass of water can be lifted in these 2 minutes? फिर से एक बार इसको पढ़िए, अपना अपना दिमाग लगाइए। जूल which we have, is that okay? Power into time, time is 120 seconds. Clear?
or any doubt? Or we may write it as 2 into 60. I don't mind. And this much joules. क्योंकि वर्क है इसलिए यूनिट जूल हो जाएगा. Now this work is doing what? The amount or the quantity of work which we have from the motor, that is being utilized to do some work, or that is being utilized how to pull the water into a water tank which is situated at a height of 20 meters, right? That means what are you doing? What exactly are you doing in this process? Gravitational potential energy. Yes, you are trying to convert or change the gravitational potential energy of the water lying on the ground into, or by putting it at some height above the ground. So you are raising the gravitational potential energy. Now change in gravitational potential energy is equal to again the work done. Is that okay? Very good. So this work done is going to be equal to P final minus PE initial, which is equal to M into G into H final minus MGH initial. This is change in potential energy. So I don't understand what do you mean by final. What do you mean by final? Final का मतलब होता है बेटा आखिरी में जो चीज रहती है ना किसी के पास लुटने पिटने के बाद, उसको फाइनल बोलते हैं. और इनिशियल कोई भी काम चालू होने के पहले जो आपके पास रहता है वो इनिशियल बोला जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग एच आई की वैल्यू क्या है? एच आई इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर रेजिंग द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. एंड एच एफ क्या होगा? 20 मीटर. As hi is 0, therefore this entity will become 0. Are we getting this point? Therefore, now we will put m is equal to unknown, g is equal to 10, and h is equal to 20. This is the work done. Now, work done from part 1 and work done from part 2 must be equal. Is that okay? That means m into 10 into 20 should be equal to 100 into 2 into 60, or m is equal to 100 into 2 into 60 divided by 10 into 20. So this makes 60 kg. Is that okay? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. घर जाके पीडीएफ से नोट कर लेना. नहीं क्या यहाँ पे ही सारा टाइम वेस्ट करोगे. कहाँ पे बेटा? 2 into 60. M into 10 into 20. Now let us go through the text.
Power of a body is defined as rate of doing work by the body. A rate of doing work by the body. Very good. So I should add this word into my definition. Rate of doing work by the body. ठीक है? I must amend this. If body performs a work W in time T, the power spent by the body is power is equal to work done by the body divided by time taken. Or P is equal to W upon T. It's not capital W, it's small w. Power में W by T में W is small w. Work done is small w. ठीक है? Note 1. The symbol P is also used to represent pressure, but pressure and power are different quantities. What happened? Any problem? Different persons may take different time to do the same work. Power and energy or work done are related to each other. If a source of power P is used for time T, the energy spent or work done is P into T. Thus, when a body does work or spend energy, we often come across the term power spent by the body. All electrical appliances are rated with their power. When an appliance is in use, the electrical energy spent is given by product of its power and time for which it has been used. We pay cost for this electrical energy consumed. For example, if we use an electrical motor of power 1.5 kilowatt to lift water in overhead tank for 2 hours, the electrical energy spent is 1.5 kilowatt into 2 hours. That is 3 kWh. 3 kWh. Kilo का kilo, watt into hour. 2 and 1.5 को multiply कर दिया हमने, it became 3 kWh. Now kWh is basically commercial unit of power. Commercial unit of energy. kWh is commercial unit of energy. ठीक है? Joule is SI unit of energy and kWh is commercial unit. yes. एक सेकंड बताता हूँ. किलो watt hour. कमर्शियल का मतलब क्या होता है पता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिजनेस में ही होता है. सो कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जहां पर भी पैसे की लेन देन इन्वॉल्व हो. ठीक है? जहां पर भी पैसे की लेन देन इन्वॉल्व होती है उसको कमर्शियल बोलते हैं. तो एनर्जी को खरीदने और बेचने का काम हम जूल में नहीं करते हैं, इसमें करते हैं किलोवाट आवर में करते हैं. ठीक है? एनर्जी को खरीदने और बेचने का काम हम किस यूनिट में करते हैं? किलोवाट आवर में. ठीक है? जूल में नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जूल बहुत छोटा एनर्जी होता है यूनिट. ठीक है? उससे हमारा कुछ काम दाम होगा नहीं. बात समझ में आ रही है?
1 kWh का प्राइस बेसिकली कमर्शियल, इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और एक कमर्शियल यूनिट की एनर्जी जो भी हमारा बिजली का बिल वगैरह आता है उसमें आपको मीटर रीडिंग के हिसाब से एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है पर यूनिट एनर्जी का. It's around 10 or 12 rupees per unit at present in Mumbai. ठीक है. So हेलो हेलो. हाँ 4 बजे से. ठीक है 4 to 6. ओके. 6 साढ़े 6 में निकलूंगा यहाँ से. 6:30. ठीक है. यस बोलिए बेटा. 1 किलोवाट आवर कितना जूल है? कर रहे हैं कैलकुलेट. So kilowatt hour is commercial unit of energy and hence it must be related to SI unit of energy, that is joule. ठीक है. So सबसे पहले 1 kilowatt hour मतलब 1 kilowatt into 1 hour. Is that okay? 1 kilowatt is 1000 joule per second multiplied by 60 into 60 second, that is equal to 1000 into 3600 joules, which is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules, or 3.6 mega joule. Is that okay? 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joules, or 3.6 mega joule. Is that okay? कैपिटल M को गलती से छोटा m ना लिखें, otherwise मेगा will become मिली. ठीक है. And there will be a difference of 10 to the power 9 in these two units. ठीक है. कैपिटल M का स्मॉल m हुआ तो मेगा से मिली हो जाएगा. मिलीजूल? जी हाँ. सर इस मिलीजूल है. हाँ इस मिलीजूल है. हाँ. मिलीजूल क्यों? सर इस सेंटीजूल है सर. Yes, every milli, centi, deci, meter, डेका, हेक्टो, किलो, everything has a meaning. ठीक है. If kilo and joule have meaning, then obviously hecto and deca will also have meaning, and deci and centi and milli will also have a meaning, and micro will also have a meaning. ठीक है. Everything will have a meaning. क्या हो गया? माइक्रो का मिली is going to be बेटा पिको. पिको? हाँ. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा? अगले साल पढ़ाऊंगा बेटा, अभी बेचैन ना हो. और अगले साल पढ़ाऊंगा तो भागना मत, नहीं तो पकड़ के मारूंगा. चलो अभी फिलहाल पढ़ाई कर लो, अभी जो पढ़ना है वो पढ़ लो. So it is 3 kilowatt hour for which cost is paid to the electricity board, and we say that power spent by the pump is 1.5 kilowatt. If we say 9 watt LED is glowing, we mean to say that while glowing, LED consumes 9 joule of energy per second. It is consuming 9 joule of energy per second. ठीक है. 9 watt LED. 100 watt LED का मतलब क्या होगा, या 100 watt fan का मतलब क्या हुआ? It is consuming 100 joule of energy per second. Is that okay?
बात समझ में आ रही है? Yes. एसी अगर 500 वॉट का है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज 500 कंज्यूमिंग joules per second. 500 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। क्लियर है या कोई डाउट? वेरी गुड। यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, वॉट, ये सब कहानी हम लोग कर चुके हैं, सो नॉट टू वरी। डू यू नो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी ऑफन यूज हर हॉर्स पावर symbol hp as unit of power. It is related to watt as 1 hp is equal to 746 watt. Kilowatt hour is unit of energy where 1 kWh is 3.6 into 10 to the power 6 joule. Is that okay? ये नोट कर लिया हम लोगों ने? वेरी गुड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर ऑफ अ सोर्स। Power spent by a source depend on two factors. First, the amount of work done by the source, and the second, the time taken by the source to do the said work. दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कितना काम किया और कितनी देर में किया। ठीक है, बिल्कुल। जब मैंने पूछा तब आपको याद आया कि नोट करना है। वेरी गुड। अभी तक सो रहे थे आप। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद क्या होता है? Make most use of studying. हिंदी पढ़ते नहीं है हम लोग। हिंदी में देयर इज समथिंग कॉल्ड संधि एंड विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना और संधि मतलब जोड़ना। ग्रामर पढ़ते हो? ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है हिंदी के? हिंदी हाँ, अभी सर शब्दकोश ही करा है, हिंदी का कुछ नहीं। खाली हिंदी में सब कुछ करा है। वेरी गुड, दैट्स नाइस। हाँ बेटा, सब मैं ही सिखाऊं तुमको। नहीं, पहले फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। इफ चलिए, इफ आई थिंक अगले साल फिर पढ़ना होगा तुम लोगों को 9th को में संधि विच्छेद। उसके बाद फिर मैं एक बार फिर से बात करूंगा विद्यार्थी के ऊपर तुम लोगों से। क्या विद्यार्थी का आपने पूछा क्या? मुझे समझ में नहीं आया। सर विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट ना? हाँ, विद्यार्थी का मतलब अब जोड़ स्टूडेंट। दो आपने कहा। क्या आओ संधि विच्छेद करना है, समझ में नहीं आया। विद्या का अर्थ ही क्या होता है? तोड़ना। विद्या का अर्थ है विद्या का तो आरती। विद्यार्थी पूछते आरती हैं विद्या का अर्थ क्या होता आरती है? मतलब पूजा पाठ। आरती आरती है। who carry forward the legacy Of or works of studies are known as विद्यार्थी और स्टूडेंट्स। बट हम लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो विद्या की अर्थी निकालते हैं। हम आरती नहीं है, हम अर्थी निकालने वाले विद्यार्थी हैं। नहीं, दूसरा क्लास भी है तुम्हारा? वेरी गुड, यस। हाँ, बैक टू if a machine or a person does a given amount of work at a faster rate, that is in less time, more power is spent by it or him. Example, if a pulley takes 1 minute to lift a load to the roof of a bus, another pulley takes 2 minutes to lift the same load to the roof of the same bus, the work done by both the pulley is same, but the power spent by pulley A is twice the power spent by pulley B, because pulley A does work at double the rate, that is in half the time compared to the pulley B. Difference between work and power. Work done by a force is equal to the product of force and distance moved in direction of force. वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस।
कवर्ड सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, वो अगर डेफिनेशन पढ़ा है तो पावर का एक और डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। अब चूंकि वो पढ़ ही लिया है हम Power is लोगों the ने। rate of doing work upon period time. हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पहले बता लेने दो। वैसे हम The लोग काफी power is the- इंटेलिजेंट हैं, Power is the quotient. आई नो, बट प्लीज लेट मी डू माई जॉब। F इंटू डी क्या होता है? वर्क डन। वेरी गुड। और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर हो जाएगा। अब कैन आई राइट इट एज F इंटू डी बाई टी, एंड ये d बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम क्या होता है? वेरी गुड। So this becomes F into V. velocity. Yes, very good. नोट भी करना है, खाली देखना नहीं है उसको। नहीं, समझ तो आप बहुत कुछ जाते हैं, बस याद नहीं रखते हैं। वेरी गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और वर्क डन और भी दो चीजें होती हैं, रेट ऑफ सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये भी होता है ना? गुड। क्या हुआ? ओके, डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वर्क होता है। पावर क्या होगा? पावर ऑफ अ सोर्स इज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इट, दैट इज वर्क डन इन 1 सेकेंड। Work done does not depend on time. Power spent depends on the time in which work is done. SI unit of work is joule, whereas SI unit of power is watt. Difference between energy and power. Energy of a body is its capacity to do work. Power of a source is rate at which energy is supplied or work is done by it. Energy spent does not depend on time. Power depends on time in which energy is spent. SI unit of energy is joule. SI unit of power is watt. ठीक है। सो इसके साथ हमारा डिस्कशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आते हैं। और हम लोग हाँ सब करेंगे बेटा। अभी 12 ही बज नहीं, 12 भी नहीं बजा, अभी 11:30 ही हो रहा है, 11:40 हो रहा है। ठीक है, we still have 45 minutes. 45? Yes. अबे 11 सर हमने 10:30 स्टार्ट किया था। 10:45 बेटा। नहीं सर। Yes हाँ, बेटा। हाँ, 10:45 चलो। सर। अबे 10:33 को तो मैं वडाला स्टेशन पर उतरा हूँ, 10 मिनट लेट हो गई ट्रेन मेरी। 23 को उतारनी। Discuss the first the solve examples. First question is, a force of 200 Newton moves a body through a distance of 2 meter in direction of force. Calculate the work done. It's pretty simple. We know that force into displacement is equal to work done. So 200 into, हेलो, अरे बाद में बात करता हूँ 1 घंटे के बाद, कुछ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। हाँ, what about it much? A machine moves a load of 520 Newton by a distance 5.2 meter vertically up. Calculate the work done by the machine. So again, force is 520 Newton and it is moving the object by 5.2 meters, right? So the work done will be force into displacement or distance covered. So 520 into 5.2, that is going to give us 52 into 52, 52 का स्क्वायर क्या होगा बिना देखे बताओ? 52 का स्क्वायर क्या होगा?
क्या बात है, वेरी गुड। 124. Sorry, 1204. 1204. 1204 32 का स्क्वायर होता है। 2706. क्या 2704? 2704. Sir, 2704. ओके 2704 गुड। हाँ क्या हुआ? हाँ पता है मुझे, थैंक यू, काफी जल्दी बताया हम लोगों ने। हाँ okay, the next one is a coolie raises a box of mass 50 kg to a vertical height of 3 meter. Calculate the work done by coolie if the force of gravity on 1 kg is 10 newton. 1 kg पर 10 न्यूटन है तो 50 kg पर कितना होगा? 500 न्यूटन। इज दैट ओके? या mgh डायरेक्टली कर ले, 1 kg मास पर 10 न्यूटन है मतलब g की वैल्यू 10 है। अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखने का दूसरा तरीका ये होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी 1 kg पर 10 न्यूटन लिखा जाए, होगा ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg, राइट? if 1 is 1 k, sorry, mass is 1 kg, ठीक है, एंड ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। सो 1 kg मास पर अगर 10 न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसका मतलब जी की वैल्यू क्या लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ओए क्या कर रहा है? सो जा। ठीक है, सो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने का दूसरा तरीका हमारा क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास इज 10 न्यूटन अगर लिखते हैं, दैट मींस g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मास is 50 kg, तो mgh is going to be the work done, right? Change in potential energy will be the work done, that is 500 into 3 or 50 into 10 into 3, that is 1500 joules. Is that okay? तो कहाँ कोई हुई है आज? What is the potential energy of a stone of mass 10 kg that is lifted to a height of 8 meter if g is equal to 10 newton per kg? ठीक है, यहाँ पर g दिया हुआ है बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं दे करके इसको न्यूटन पर केजी में दिया गया है, विच हैज सेम मीनिंग। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा कभी बातचीत किया है हम लोगों ने? वेरी गुड। सो मास इज केजी and acceleration is meter per second square. This is equal to Newton. Therefore, meter per second square can also be written as Newton per kg, which is Newton kg raised to the power -1. Is this thing clear? हाँ तो पेपर फाड़ ले। A body of mass 5 kg is taken from a height of 3 meter to 6 meter. 3 meter to 6 meter. Find the increase in potential energy of the body. Take G is equal to 10 Newton per kg. So it is again going to be change in potential energy, mgh2 या hf minus mghi, right? mghf minus mghi. Are we getting this point? So
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी को कॉमन ले लेते हैं और फिर जी एफ माइनस जी एच आई लिख लेते हैं. एम इज 5, G is 10 and HF is 6 minus 3, that is 3. So it will become 150 joules. Is that okay? Clear to us? तुझे समझ में आया? ये ताइसा तेरे से ही पूछ रहा हूं. पक्के से अगला क्वेश्चन कर. बता. नहीं, बिना देखे बता. हाँ, क्वेश्चन देख. देख. Question number 6. 6. किया. अरे इसमें क्या पूछा गया है बेटा? बोलिए. कोई और कुछ बोलना चाहता है? Sir, G10 होगा ना? यस बेटा, लिखा है, ऐसा ही हुआ है. Sir, 100. ओके. So 100 joules. 100 joules. Plus 14 turning into 45. वेरी गुड. ये 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए बिना बुक देखे. Sir, आपको कॉपी करना है कि बिना copy? बिना कॉपी के हुए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ, इताइसा. Sir, 6th वाला हुआ क्या आया? तीनों को मतलब मैंने मार्क्स मतलब एन इनटू जी इनटू एच के बच्चे 100. आ रहा है. गुड. वेरी गुड. हाँ. 5000. किसका? 7 का. 50, 10, 500, 10. वेरी गुड. नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है. फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्या हुआ? 5000. So 5000. Very good. So the answer for the 7th one is 5,000. 5000 joules. 8th one is 1000. Itaisa and Sanaya, are we done with 7? पक्के से आगे आंसर. वेरी गुड. What is its kinetic energy? बुक को बंद कर दो तुम लोग. तुम लोगों को बुक ओपन रखने की जरूरत नहीं. मैं लिख रहा हूं. लेट अस सॉल्व इट. एट्थ वाले का 1000. वेरी गुड.
गुड। क्या हुआ? हाफ इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर, 20/2 is equal to 10. 10 into 100 is 1000. That many joules. Is that okay? Yes. सेवेंथ वाले के लिए बेटा M G H। M क्या है 50, G क्या है 10 और H भी 10 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, लेट अस गो टू जी की जरूरत ही नहीं है तो क्यों बोलूंगा। सेवेंथ वाले में लिया है बेटा, एट्थ वाले में क्यों लूंगा, हाफ mv स्क्वायर उसमें करना है ना। काइनेटिक एनर्जी में जी की क्या जरूरत है, नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9, a bullet of mass, ओए किताब बंद, कोई बात नहीं है, मत क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं ना। इंटेलिजेंट है हम लोग। हाँ, जी का मतलब ग्राम होता है, ठीक है। हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 200 joules. Find the speed. Find the speed of the bullet. Yes, बेटा। ये लिखा क्या है? अच्छा रुको सर 280 जूल 200 200 लिखा हुआ है बेटा, 2 पर 2 जी, 2 0। उसके बाद फाइंड लिखा है ना। हाँ, उसके बाद फाइंड लिखा हुआ है बेटा। कुछ प्रॉब्लम है ऐसा? Find the increase in kinetic energy of a body of mass। क्या हुआ सर 3.3 आएगा 3.3 आ गया 9th का, बताइए। मुझे तो ज्यादा आ रहा है, ऑफ मास 500। क्या व्हेन, गलत, गॉट इट, तो सही करो। व्हेन इट्स स्पीड increases from 2 meter per second to 4 meter per second। यस, किसका? नहीं, सर 10 का आंसर 4 टाइम्स 9th किया सर 9 मैंने मुझे समझ नहीं आया क्यों? सर मैंने बोला कि 10 का वो है। हाँ तो नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिट्स, पता है हम लोग को। ग्राम में ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ग्राम इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ मास। तो पहले आपको काइनेटिक एनर्जी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो उसको मास को भी आपको ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। देयरफॉर इट विल बी हाफ इनटू 0.04 multiplied by velocity square is equal to 200. That is going to give me velocity square is equal to 200 into 2 divided by 0.04. This is going to make 100 into 100 or 10,000,
this is going to give me 100 into 100. Therefore, velocity is equal to 100 meter per second. Yes. नहीं नहीं यहीं पे बैठो, थोड़ी देर बैठो, इनका खत्म करके फिर तुम्हारा चालू कर. Yes. Did we understood this? The validity is 0.0. कुछ भी कन्वर्टिंग में नहीं तो किलोग्राम को ग्राम, सॉरी ग्राम को किलोग्राम में करेगी कन्वर्ट, तो 1000 से डिवाइड करेगी. अब 40/1000 क्या होगा? अबे इतना बेसिक चीज तो तुम लोग करोगे ना, कि ये भी नहीं करेंगे हम लोग. चलो ये भी मत करो तुम लोग, कहाँ करोगे? 40/1000 kg into velocity square is equal to 200. That implies velocity square is equal to 200 into 1000 into 2 divided by 40. This is equal to 100 into 100. 100 speed. Therefore, velocity is equal to 100 meter per second. Is that okay? अभी समझ में आ रहा है या कैंसिलेशन भी करके दूं? अच्छा, अगर हम 40/1000 को वहीं पर सॉल्व करके 0.004 मिनट, we don't have to add 1000, right? Yes, Just cross. definitely. पहले वैसे ही किया था मैंने. हाँ, Yes, 10th question is here. Now I am going to write the 11th one. Yes, any problem? A boy has to do. So what is the last word of the first line of the 10th sentence? कहाँ हो गया, क्या है बेटा? यहाँ पर मास लिखा हुआ है. A boy has to do 300 joules of work in joule of work in time 0.5 minute to lift luggage to the roof of a bus. How much बोलिए power does he spend? Yes, 10th में क्या आया हमारा आंसर? 3 आया. 16 माइनस 4 12, 12/2 6, 6/2 3. Very good. It's coming out to be 3 joules. सारे लोगों का 3 जूल आया. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 वर्क डन और 1/2 इंटू कौन सा वेलोसिटी? अभी चेंज निकालना है बेवकूफों, गधों. चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना. और बदल रहा है तो 2 वैल्यू रहेगा, तभी चेंज निकालोगे ना. हाँ, MGH
नहीं, सपने में दौड़ना है। उन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। 3000 कैसे हो जाएगा? हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किया है। 0.5 ठीक है, हाँ बोलिए। आ गया ना? क्या? 11th is 10 watt, 300 joule work in time 0.5 minute, 30 सेकेंड हो गया। हाँ ठीक है, दिस इज 10 watt। हाँ बोलिए बेटा। तुमको भी आ गया 10 watt। उसके पहले वाला सॉल्व हुआ? तुम 10 watt पे पहुंच गई, उसके पहले वाला सॉल्व नहीं हुआ। Change in kinetic energy is equal to KE final minus KE initial, that is half m into Vf square minus half m into Vi square, that is equal to half into mass is 0.5, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना? पहले लिख लें क्या? m is equal to 500 grams, that is equal to 0.5 kg, नहीं, एक स्टेप और लिख देता हूँ। 500 upon 1000। यस, नहीं तो हम लोग काफी इंटेलिजेंट। अभी 2 मिनट में क्वेश्चन आएगा। सर 500 का 0.5 कैसे लिख दिए? क्योंकि हम लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं। सो 4 का स्क्वायर हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मेक्स हाफ इंटू 0.5 इंटू 16 माइनस हाफ इंटू 0.5 इंटू 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस पार्ट इज, ये 2 16 को कैंसिल करके 8 करेगा, 8.5 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 into 0.5 is 1, this gives me 3 joule as answer। is that okay? बोलिए बेटा। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा देर तक हम नीचे करके ऊपर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन भी लिखना है ना बेटा। एन इलेक्ट्रिक heater of power 3 kilowatt used for 1 minute, find energy supplied by the heater। So it is how much? हाँ, ये वाला हुआ 10 watt वाला। So a boy is doing some work of 300 joule in half minute. Time is 0.5 minute, which is equal to how many seconds? Very good। वर्क डन कितना है? 300 जूल। तो पावर क्या हो जाएगा? W upon T, which is 300 upon 30, which is 10 watt। Is that okay?
वेरी गुड, ये बात समझ में आ रही है ना? अगला वाला क्वेश्चन करिए। एंड देन कम्स 13th क्वेश्चन। A So my pump, answer is 1800,000. किसका? 100,000. 12th वाले का हाँ ठीक है, करेक्ट ना? यस। किलोवाट अबे यूनिट को देखना होता है, दुनिया का सबसे पहला काम एज ए स्टूडेंट आपका यही होना चाहिए, क्वेश्चन में यूनिट को देखो। 300 it's going to be 300. कौन सा? 3000. क्या प्रॉब्लम हुआ? 3000. क्या? हाँ ठीक है ना, 1800,000. 1 lakh. क्या बोल रही है? सॉरी। हाँ उतना बड़ा होगा, क्या Kilowatt प्रॉब्लम है है? ना, but it doesn't say kilowatt. That's why है ना. उसमें क्या प्रॉब्लम है तुझे? बड़े आंसर नहीं होने चाहिए? अच्छा सर, हाँ, बोलो। समझ वाला क्या हुआ? सर 3 to 1000 और फिर Very good, बेटा। सेकंड्स। हाँ वेरी गुड, चलो सॉल्व कर लो। करेक्ट है। हाँ बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। तुमको सेल्फ बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? 3 kilowatt. हर बार तुम गलत ही करोगे, इतना कॉन्फिडेंस तुमको खुद के ऊपर क्यों है? Into 60. 3,000. बिल्कुल नहीं, सही है। Sir, 3,000 into 6. तुम इतने कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर कि तुम जो करोगे गलत ही करोगे। नहीं ना। 500 कैसे? हाँ बेटा, Power is equal to energy divided by time. राइट। सर तो एनर्जी हुआ 3,000 ना? कहाँ पे? Power हाँ। 3,000. सर 1,80,000. ओ Power पावर 3,000. वो नानिया. अब composition of English. सर 1,80,000 है ना 12th का? हाँ बेटा, सर यूनिट जूल रहेगा। और क्या रखा जाए बताइए? सारी चीजें एसआई यूनिट में है, तो एनर्जी का यूनिट क्या रखेंगे? अर्ग। हाँ, ये तो नहीं कर सकते हैं हम। क्या आप कर सकते हैं? What did you answer again? अबे यहाँ पे देखो, आंसर में क्या कंफ्यूजन है तुझे? देख, किलो का 3 जीरो, ठीक है, और 60 इंटू 3 का 180, समझ में आ रहा है? 60 का 80, 6 into 380. 4 0. कैसे बताना? सर वो लास्ट ईयर का पेपर नहीं है। तो क्या किया जाए? चलिए आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ये आखिरी है। सर if force From a belt. सॉल्व एग्जांपल का। If force. सर ये खत्म नहीं होता। If force of gravity on 1 kg mass is 10 Newton, find a work done by the pump, B potential energy stored in the water, C power spent by the pump, and D
power rating of the pump state assumption if any. हाँ, सबसे पहला पार्ट इसमें है व्हाट इज द वर्क डन बाय द पंप. द पावर इज गिवन क्या? नहीं. So work done by the pump is the energy spent in order to lift the water from 60 meter deep inside the earth to the surface of earth. Is that okay? And the mass is 100 kg, so it is simply going to be mgh, which is 100 into 10 into 60, 100 into 10 into 60, which will become 60,000. ठीक है? So the first part is going to be 60,000 joule or 60 kilojoule. क्या? mgh, work done is equal to change in potential energy is equal to mghf minus mghi. HF और HI का डिफरेंस क्या है? H is H final and H initial. राइट, उन दोनों का डिफरेंस हमारे केस के लिए क्या है? 60 मीटर. इज दैट ओके? क्या क्या कष्ट हो गई आपको? So P is stored in water will also be that only. रुक जाइए, हम बोलिए. अगर हम लोग मिनट्स भी वैसे 60 मिनट्स कंफ्यूज हो सकते हैं. नहीं, कंफ्यूज होने का कोई पॉइंट नहीं है बेटा. सर कोई और हाइट जो होगा ना वो मिनट में नहीं हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सेंस हमको लगाना होता है. नहीं, एम डालें या आर डालें या एक्स डालें उससे क्या फर्क पड़ता है. मुद्दे की बात यह है कि वो हाइट है और वहां पर एम लिखा हुआ है मतलब मीटर होगा. अब गलती से मिसप्रिंट में एमआई भी लिखा रहेगा तब भी उसको मीटर ही पढ़ोगे ना, कि ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे. हाइट को मिनट में न काउंट करोगे. ठीक है ना? No, I think more potential. यस बेटा. So Potential energy भी same होगा ना? किसका पोटेंशियल एनर्जी? Stored in the water. हाँ, ऑब्वियसली जो वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा वाटर में. 60 किलो जूल. पावर स्पेंड बाय द पंप 60,000 by 20, that becomes 3,000 watt or 3 kilowatt. Power rating of the pump, so power rating of the pump could be 3 kilowatt. और यहाँ पर assumption क्या है बेटा? assumption ये है कि मैं I'm assuming that my pump is working at 100% efficiency. Okay. ठीक है? If it is not working at 100% efficiency, suppose it is working just at 60% efficiency. ठीक है? मतलब वो जो काम कर रहा है वो 3 किलोवाट के रेट पर कर रहा है, बट वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट हैज टू बी हायर, और जितना कंज्यूम कर रहा है उसका 60% इज व्हाट इट इज यूटिलाइजिंग. Are we getting this point? Okay, so it's not This is working, the it's not functioning. right. This is the energy which it is utilizing or delivering. ठीक है? The energy which the machine is consuming or the rating of the machine is going to be higher. अगर 100% पर नहीं काम करेगा तो, जैसे मैं 3 घंटे पढ़ाता हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग 3 घंटे नहीं सीखते हो. ठीक है? 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद अपनी हरकतें चालू करते हैं हम लोग. कोई बैठ जाता है, कोई सो जाएगा, कोई थोड़ी देर बाद बात करना चालू करेगा, किसी को अचानक से याद आएगा कि घर पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है.
एंड इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं हम लोग के साथ में, तो आवर एफिशिएंसी रिड्यूसेस एंड सो इज माइन, क्योंकि कुछ टाइम तो डांटने में भी जाएगा फिर से ऑर्डर में लाने में, है कि नहीं? वेरी गुड। सो वैसे ही पंप का, हाँ कुछ और बताइए, कोई पॉइंट ऐड करना था जो डिस्क्राइब करना मैं भूल गया? ओके, सो सिमिलरली मोटर भी जो काम कर रहा है, रेटिंग उसकी जो होगी, अगर 100% एफिशिएंसी पर काम कर रहा है तो पूरा जो रेटिंग है उसकी उतना काम कर देगा। अदरवाइज अगर 100% एफिशिएंसी पर नहीं काम कर रहा है, कम एफिशिएंसी पर काम कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी पर तो कोई काम ही नहीं कर सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम खाना खाओ 10 किलो जूल के बराबर का और काम कर दो 50 किलो जूल का, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना? सो जितनी एनर्जी वो ले रहा है उसका एक पोर्शन ही वो यूटिलाइज कर पा रहा है। अब ऐसे में अगर एफिशिएंसी मेरी मान लो 60% है, दैट मींस 60% ऑफ एक्स, ठीक है, इज 3 किलोवाट। देयरफॉर x will be equal to 3 into 100 by 60. This will make 5 kilowatt. Is that okay? So the power rating of pump is 3 kilowatt at 100% efficiency, or it is, or we can say the minimum power rating is going to be 3 kilowatt. It can have any value above 3 kilowatt depending upon किस efficiency पर काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। रिकैप कर लेते हैं फटाफट, बुक ओपन करिए। यस बेटा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ भी एक बार डिस्कस कर ले। और भूख लगने का बहाना बिल्कुल मत देना, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। नहीं, मेरे पास नहीं है खाना खाने के लिए। क्या हो गया? तुझे क्या कष्ट हो गई? प्लीज मैं नीचे बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, नीचे पलस्ती मार के बैठ जाओ। यहाँ यहाँ इधर आकर। हाँ ठीक है, अब ऐसे ही बैठो पूरे क्लास में। हाँ, work is said to be done if force applied on a body moves it. If no motion takes place, no work is said to be done. Work done is zero if the motion of body is normal to the force, perpendicular to the force. हेलो सर, थोड़ा सा टाइम जाएगा सर। नहीं, आके बैठ सकते हैं, अंदर आ जाओ, नीचे या फिर ऊपर भी बैठ सकते हैं। यू कैन हाँ चलिए, वो लाइट्स ऑन कर देना। हाँ चलो, the amount of work done depends on one, magnitude of force applied. Greater the force applied, greater is the work done, and two, distance moved in direction of force. Greater the distance moved, greater is the work done. Is that okay? अभी कौन सा आंसर बोलेगा? सो रहा है तो क्लास में, तो क्या हो गया? Work done by a force on a body is equal to the product of force and distance moved by the body in the direction of force. That is, work done is equal to force into distance moved in direction of force. ठीक है?
F into T. SI unit of work is joule. 1 joule is 1 Newton into 1 meter. 1 joule of work is said to be done if 1 Newton force, when acts on a body, moves it by 1 meter in direction of force. Another unit of work is kgf into meter, where 1 kgf into meter is 9.8 joule precisely. The energy of a body is its capacity or ability to do work. The energy of a body in a state is equal to the work done on the body to bring it to that state. Is this line clear? The energy or the potential energy of a body in a state is equal to the work done on the body to bring it to that state. SI unit of energy is joule, whether it is potential, kinetic, or any other form of energy. Mechanical energy is of two kinds, potential energy and kinetic energy. Potential energy of a body is energy possessed by it due to its state of rest or position. State of rest or position. This is equal to the work done on the body to bring it to that state of rest or position. Potential energy can be elastic potential energy, that is energy stored when size or shape of body is changed, and gravitational potential energy, that is energy when a body is taken to a height above the ground. Gravitational potential energy of a body in the raised or lifted position depends on two factors. One, the mass of the body. Greater the mass of the body, greater is the potential energy of the body. And two, height of the body above the ground. Greater the height of the body, greater is its potential energy. It is given as PE, which is also referred as U, which is equal to mgh, where g is the force of gravity on mass of 1 kg. Its value is nearly 10 Newton per kg. Kinetic energy of a body is the energy possessed by it due to its motion. Kinetic energy of a moving body depends on two factors, mass of the body and speed with which it is moving. Kinetic energy is equal to half mv square. It is kinetic energy which can change into any other form of energy such as heat, light, etc. Potential energy does not directly change into any form of energy except kinetic energy. When it is put to use, the energy exists in different forms such as mechanical, heat, light, sound, electrical, chemical, solar, nuclear, etc. One form of energy can be changed into other useful form of energy. Power is defined as rate of doing work or energy spent in 1 second. That is, power is equal to work done upon time, or energy spent is equal to power into time. Power spent by a source depend upon time for which work is done. Power spent is more if same work is done in less time. The SI unit of power is joule per second और watt. ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज और मुझे बताना है. Have you heard of nuclear power plants? Yes. वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम फ्यूजन मेथड से, रेडियो एक्टिविटी के फ्यूजन मेथड से डिसइंटीग्रेट तोड़ते हैं न्यूक्लियस को और उससे एनर्जी निकलता है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन.
there is another process called nuclear fusion. इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, जब जुड़ता है तब भी एनर्जी देता है और जब टूटता है तब भी एनर्जी देता है। ठीक है, यूरेनियम से बनने वाला बम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और हाइड्रोजन से बनने वाला चीज जो होता है बॉम्ब, दैट वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कूलिड, देखो इसमें ट्रू फॉल्स सब दिया हुआ है तो ये कराने का कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट आंसर जो है उनको डायरेक्टली कर सकते हैं। करके आई है तो फोटो भेज दे मुझे, मैं चेक कर दूंगा। हाँ, डिफाइन, हाँ बिल्कुल भेज देना ना। सबने किया है क्या इसको? कौन सा वर्कशीट? हेलो, हाँ मैं 8 से कल मतलब मंडे को 8 बजे से रहेगा। हाँ और नहीं मैम, हम एक्चुअली वो 8 बजे से लेक्चर चालू हो जाएंगे, अभी अब रेगुलर रहेगा 8 बजे से। वो मतलब वहां से कितने देर में सेंटर पर आ जाएगी? अगर 8:10 तक आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 10 मिनट एडजस्ट हो जाएगा। ओके, yes, define the following: work energy, kinetic energy, potential energy, gravitational potential energy and power। आप लोगों ने लिखा हुआ है इसके आंसर्स? वेरी गुड। तो सारे लोग मुझे भेज दो या फिर लाए हुए हो तो दे दो चेक करने के लिए। बेटर ये होगा, नहीं फाड़ के मत दो, फिर घर पे पढ़ोगे किस चीज से? सारे लोग फोटो लेकर के भेज दो, मैं सबके चेक करके शाम तक आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, सर आपने मेरा सामने मैंने आपको भेजा वो चेक किया है बेटा, सारा पढ़ लिया, सब सही था तो उसमें क्या बताओ? अच्छा बोल दो, हाँ तो ये कर लिया सारा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई मीन देयर इज नो लाइक कहीं पर भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, सो एवरीथिंग वाज लूसिड एंड क्लियर, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बेटा, तुम फोटो लेकर के भेज दोगे मेरे फोन पर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। हाँ दोनों में ऐड कर देता हूँ। सर मुझे ना साउंड में डाउट है। हाँ बोलो बेटा। एक मिनट बता। सर मैथ्स मंडे को रहेगा। हाँ मैथ्स मंडे को रहेगा ऑन यूजुअल टाइम। सॉरी बेटा, सर यूजुअल टाइम सर मेरा नंबर ऐड करना। अभी तेरा ऐड है ना? नहीं है सर इसमें ना रुक जा। इसमें लिखा है सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा है that frequency does not depend on the nature of medium। एक मिनट रुक जा, अभी मैं पहले एक काम कर लूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ आदित्य, नंबर बोल। 9321426171। रुक जाओ, सारे लोग अपना एक एक करके नंबर बोलते जाओ, जिसको जिसको ऐड कराना है। रुको, वेरी गुड।
तो अभी क्या करूं मैं ये बताओ। मत ऐड करो ठीक है, तो हाँ नंबर बोल बेटा। 97 692 25 421। हाँ उनका तो एडेड ही है ऑलरेडी। हाँ पता है। सर मैं ऐड हो गया। सर मैं ऐड हो गया। अबे रुक जा, अब ऐड करने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर है सेम you won't hear. सर अभी जा रहे हैं कहाँ? अभी देखना कितना है। हाँ जाओ। 39 सर ये इसके पीछे वाले क्वेश्चन क्या Short long questions. शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस करना है? ये ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे कवर्ड हो गया है। हो गया सर। इसमें लगभग सारी चीजें कवर हुई हैं, और नहीं कवर हुई हैं तो ठीक है बैठ जाओ थोड़ी देर, वी कैन डिस्कस। हाँ क्या? नहीं नहीं ट्रबल करना है, नहीं लिख के आओगे नंबर नहीं आएगा तो बहुत मारने वाला हूँ। चलेगा। सर आप दो मेरे डाउट क्लियर कर दो ना प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा। ओए ये बहुत सारे फुटबॉल वुटबॉल डाल के रखा है, वही है तू? फुटबॉल? हाँ मैंने फुटबॉल किधर डाला है? मुझे क्या पता। डाला है ना हैं? तो बहुत अच्छा है ये क्या? एक फुटबॉल है एक कुछ और है एक कुछ और है एक कुछ और एक कुछ और। हाँ ये यही है ना तू? हाँ अरे मेरा मेरा क्या बात? मेरा हाँ पता है मुझे। सर हाँ रुक जा इसमें लिखा है एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओए मैथ्स में भी ऐड करना है तुझे? ओके हाँ 9324 हाँ तो रुक जा, पहले नंबर मांग रहा था तो तूने दिया नहीं। तो कौन से ले रहे थे? अबे सबसे अलग अलग दूंगा, बताइए। सर मैं घर जाके क्वेश्चन भेज दूं क्या? कौन सा? नहीं तू 2 मिनट रुक जा, मैं कर रहा हूँ अभी। अभी तूने एक और काम बताया मुझे, वो करूँ कि नहीं करूँ ये बता। योर नेम, रुक जा, स्तुति। नहीं mom's name is Rachna, right? Rachna Goyal, yes. हाँ नंबर बोला। 93247 93247 39454 39454। 39454 सुपर फास्ट ट्रेन की तरह फटाफट ड्यूटी पूरी कर देनी है। राजधानी एक्सप्रेस। यस No, it's Tejas Express. क्या हुआ? क्या हो गया? क्या कर रही है? Who's being Who? No call him, but no, he's very comfortable. अरे कल वाला पेपर किया था क्या रात को? किए थे? I think also one of my 13-year-old. I'm very. I don't have to. I'm selfish with this shit. Sorry. हाँ यस यस, 1 मिनट और बस। हो गया।
and let it slow. Into Shimla, it was big snow. I have to go inside. And then we have to stand. There is what we are. Two things. Done. So, Now tell me your doubt. Sir, I can understand what it means by that it does not depend on nature of medium. क्या क्या sorry? In फिर से? nature of medium पे depend नहीं करता. I can understand what it means. But अगर medium is vacuum तो एक सेकंड किस चीज के लिए बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाँ. वेव ना. हाँ, frequency of the wave is not going to depend upon the nature of the medium or the amplitude of vibration. I didn't understand why not the nature of medium. नेचर ऑफ मीडियम पे क्यों डिपेंड नहीं करता है? हाँ. सी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होता है किस सोर्स से निकल रही है उसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. और डिफरेंट मीडियम से अगर हमारा वेव पास कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है. फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज. ठीक है. स्पीड एंड वेवलेंथ डू चेंज. they are बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि या समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो वेव का डीएनए होता है. Okay. So DNA will not. कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. जब तक आइडेंटिटी ऑफ वेव इंटैक्ट है उसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी से ही वेव को आइडेंटिफाई किया जाता है. वेवलेंथ एंड स्पीड आर सेकेंडरी थिंग्स. प्राइमरी थिंग इज फ्रीक्वेंसी. उसी के बेसिस पर हम वेव को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. Okay. Thank you. ओके. तीन पेपर उसने अटेम्प्ट किया है. इट्स अ गुड प्रोग्रेस. हाँ हाँ. ग्रेट. एक पे 170, एक पे 209.